विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् जन्माप्नोति। ऑनरेबल इधर देखिए इधर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। I, for one, are among those who've seen this institute growing inch by inch, brick by brick, right from the day when Dr. N.S. Pathania, the founding principal, started the first ever batch of MBBS in barracks, because you didn't have a building of your own. And then, of course, the institute, having been founded in 1970s, evolved over the next few decades, which also incidentally happened to be decades when the medical education was evolving in this country. The 70s and 80s, when Dr. Kudiyar and others dedicated to a super specialty, when the DM and MCH courses were being introduced in different institutes of the country. And as far as endocrinology, the subject chosen today, I believe Dr. Dash was the first ever endocrinologist in 1970s. And then, of course, the first generation, the first among all of them was Dr. Kudiyar for Jammu and Kashmir. So we have seen those times when these early batches of super specialists coming out with their DM and MCHs were struggling to set up super specialty departments because they had a lot of passion. But I think the best way to kill the passion is to take up a government job. So gradually they worked, they fatigued, got tired, but at the end of the day, they did their best. I remember Dr. Kudiyar being at pains, calling inspection teams time and again to get approvals. And having accomplished to an extent, may not be fully. And therefore, it's also a vindication of sorts to see today Dr. Suman and others accomplishing, if not wholly, at least to a great extent, what was envisaged by the early generation in this specialty. And therefore, as far as chirology or the theme of this conference is concerned, I think like many other components of endocrinology, thyroid not only lacked much of understanding among the medical faculty, but also much of awareness in the public. In spite of the fact that even in a small territory like Jammu and Kashmir, we have almost 12 to 13% of prevalence of thyroid disease. अभी सर क्या कहेंगे आज के? नहीं, बधाई के पात्र हैं यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन, एंडोक्रिनोलॉजी विभाग की ओर से, जिसके साथ हमारा व्यक्तिगत भी जुड़ाव रहा कई वर्षों तक, कई दशकों तक। उनकी ओर से इस गोष्ठी का आयोजन किया गया है थायराइड को लेकर के। और इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार भारतवर्ष में स्वास्थ्य सेवाओं को, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बहुत अधिक प्राथमिकता देने का काम किया है, जो शायद पिछली सरकारों से कहीं ना कहीं छूट गया था। और जिस प्रकार कोविड की आपदा के दौरान भारतवर्ष में मात्र 2 वर्षों के भीतर 2 वैक्सीन तैयार किए गए बायोटेक्नोलॉजी विभाग की ओर से, DNA वैक्सीन, नेजल वैक्सीन, न केवल अपनी तरह के पहले दुनिया में बल्कि विश्व के अन्य देशों को भी उपलब्ध करवाए गए। वो इसीलिए संभव हुआ कि प्रधानमंत्री की ओर से जिस प्रकार का प्रोत्साहन, सहयोग और सहायता हमें उपलब्ध हुई, उसने भारत की छिपी हुई प्रतिभा को दुनिया के आगे रखा और ये प्रमाणित कर दिया कि भारत में प्रतिभा की, योग्यता की, परिश्रम की कोई कमी नहीं,
शायद कहीं ना कहीं उस प्रकार की नीति निर्धारकों के स्तर पर प्राथमिकता के अभाव था और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये हमें सफलता प्राप्त हुई। आने वाले वर्षों में जैसे कि मोदी जी बार बार कहते हैं कि अमृतकाल का समय है 25 वर्ष, और आज से 25 वर्ष के बाद सन 2047 में आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा और भारत शिखर पटल पर खड़ा होगा। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर न केवल हमारा एक स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से एक दायित्व बनता है, बल्कि एक आम नागरिक की ओर से भी, क्योंकि आज का युवा अगले 25 वर्षों में राष्ट्र निर्माण में अपनी सेवाएं, अपना प्रतिभा, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता समर्पित करने की स्थिति में होगा, और इसलिए उसकी स्वास्थ्य की देखरेख करना और उसे बीमारियों से रोकथाम करना, ताकि वो अपनी ऊर्जा और अपनी क्षमता को पूरी तरह से राष्ट्र